Hello viewers, this is the second lecture for coordination compound including Wagner's theory, specific effective atomic number rule and valence bond theory. Wagner's theory is very early stage theory for coordination compound. To explain characteristics of cobalt-amine complexes. Cobalt-amine complexes, Wagner proposed following postulates. First, in coordination compound, the metal atom exhibits two types of valency termed as primary or ionizable valency and secondary or non-ionizable valency. Primary valency of metal atom are satisfied by anions which get ionized in aqueous solution, so it is also called ionizable valency. Primary valency of metal atom in coordination compound are equal to its oxidation number. Every metal has fixed number of secondary valency in coordination compound, which are called coordination number of metal atom. Number of secondary valency is called coordination number. The secondary valency of metal atom in coordination compound are satisfied by anions or neutral molecule having at least one donor atom and have a definite arrangement around the metal atom. जो मॉलिक्यूल और आयन सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े होंगे मेटल एटम से, उनका मेटल एटम के सराउंडिंग में डेफिनिट अरेंजमेंट होगा. Very important point. If any anion satisfying secondary valency of metal atom, it also satisfies primary valency of the metal atom simultaneously. Secondary valency से जुड़ा anion primary valency को भी satisfy कर देगा. सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग जो नॉन आयोनाइजेबल है बोल्ड लाइन से दिखा रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी को ब्रोकन लाइन से दिखा रहे हैं. दिस COCl3 6NH3, this compound gives 3 mole of AgCl when treated with excess of AgNO3. 3 mole of AgCl मतलब this compound has 3 ionizable chloride ion. इसका फॉर्मूला दे रहे हैं CONH3 6Cl3 जो आयोनाइज करके 3Cl- दे रहा है. तो यहाँ देखिए 6NH3 बोल्ड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है और 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज +3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 and coordination number is +6. When formula is COCl3 5NH3, it gives 2 moles of AgCl when treated with excess of AgNO3. This is NH3. So two chloride ions are ionizable. This chloride ion is attached to primary valency and one chloride ion is satisfying both primary valency and secondary valency. COCl3 4NH3. It gives only 1 mole of AgCl, मतलब only one chloride ion is ionizable. So 2 chloride ions are satisfying both primary valency and secondary valency and one chloride ion only primary valency. COCl3 3NH3 has no precipitate with AgNO3, मतलब all chloride ions are satisfying secondary valency. Wagner's theory failed to explain the stability, color and magnetic property of it. This is very early stage. Next, effective atomic number, specific effective atomic number. Specific proposed that ligand donates a pair of electrons to the metal atom or ion forming coordinate bond. So number of electrons present in metal atom or ion, including those donated by ligand, is called effective atomic number. The effective atomic number Z is
Z is atomic number of metal atom minus oxidation number. तो ये हो गया number of electrons in metal ion plus electrons donated by ligand. Each ligand wants a pair of electrons. Metal atom of D block cannot achieve noble gas configuration. Like Ca2 plus has 3s2 3p6 noble gas configuration. Ca2 plus. But Fe2 plus has 3s2 3p6 and 3d6 has no noble gas configuration. तो प्राइमरी वैलेंसी से इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रहा है, तो दे एग्जिबिट सेकेंडरी वैलेंसी by accepting pair of electrons from ligands so that its effective atomic number equal to nearest noble gas. CONH3 whole 3. NH3 whole 6 3 plus. CO3 plus cation atomic number 27 है, तो इसमें बचा 24 इलेक्ट्रॉन्स और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 6 पेयर 36 हो गया. Fe2 प्लस अगेन 24 इलेक्ट्रॉन्स मेटल आइटम है और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आया 36 हुआ. Pt4 प्लस 74 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड मेटल आयन में है और 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम लिगेंड बिकम 36 रेडॉन कॉन्फ़िगरेशन. NiCO होल 4 28 निकल जीरो स्टेट में 28 इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम में है and 4 pairs of ligands are coming from ligands, so it becomes 36. FeCO whole 5 iron in zero state 26 electrons metal atom में है and 5 pairs of electrons coming from ligands becomes 36. Only metal carbonyl obey EAN rule perfectly. सारे कार्बोनिल परफेक्टली ऑबे करेंगे, बट बाकी कॉम्प्लेक्स में कुछ ऑबे करते हैं, कुछ नहीं ऑबे करते. जैसे CONH3 होल 4 2 प्लस Z 29 है, तो इसमें 27 इलेक्ट्रॉन मेटल आयन में 4 पेयर हुआ, 27 प्लस 8 35 हुआ. CrNH3 होल 6 3 प्लस 21 इलेक्ट्रॉन मेटल आयन में 6 पेयर 33 हुआ. Now very important theory for coordination compound, valence bond theory. दो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी. तो इस पार्ट में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में हम क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी पढ़ाएंगे. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल एटम और आयन प्रोवाइड्स वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. जितने डोनर एटम से, लिगेंड के डोनर एटम से जुड़ने हैं मेटल एटम को, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल को लाना प्रोवाइड करना होगा. The molecular ion behaving like ligand must have a sigma orbital containing lone pair of electrons. Sigma bond between metal atom is formed by overlap of vacant hybrid orbital of metal atom and lone pair of electrons containing sigma orbital of ligand. इस तरह मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड का सिग्मा ऑर्बिटल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन. इस तरह लिगेंड से मेटल सिग्मा बॉन्ड बनता है. इफ हाइब्रिडाइजेशन इन मेटल एटम इंक्लूड्स d ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड inner orbital complex, and when d orbitals of outermost orbit take part in hybridization, the resulting complex is called the outer orbital complex. When number of unpaired electrons in complex is same to that in free metal ion, जो जितना number of unpaired electrons free metal ion में है before formation of complex and number of electrons in complex दोनों same है, तो इसे हम high speed complex कहते हैं और या speed free complex भी कहते हैं. जब complex है lesser number of unpaired electrons than free metal atom, that is called low spin or spin paired complex. Magnetic property of complex is mainly due to unpaired electrons present in metal atom. Magnetic moment put under n into n plus 2 where n is number of unpaired electrons. Examples of octahedral complex with coordination number 6. So for formation of octahedral complex, metal atom has to provide 6 hybrid orbitals
formed by sp³d² और d²sp³ hybridization. d²sp³ में participating orbital n as outermost orbit के s px py pz and d²y and dz². और d²sp³ में पेनल्टीमेट ऑर्बिट के दो d ऑर्बिटल आ रहे हैं dx² y² dz² एंड sp आउटरमोस्ट ऑर्बिट. तो अगर दोनों हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो, then d²sp³ hybridization is preferred over sp³d² hybridization because d²sp³ hybridization includes d orbitals of penultimate orbit having lower energy. So d²sp³ hybridization is preferred over sp³d² hybridization. तो मेटल एटम में आए हैं d0, d1, d2, d3 configuration. Always form inner orbital complex and high spin. d1, d2, d3 तक हमको इनर और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के d सबसेल में दो d ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे, जैसे cr3 प्लस d3 कॉन्फ़िगरेशन है. इस कॉम्प्लेक्स में d2sp³ हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये जो दिखाया जा रहा है दीज आर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है 1 2 3. तो मैग्नेटिक मोमेंट 215 हुआ, ये मैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक है. मेटल एटम d7, d8, d9, d10 कॉन्फ़िगरेशन. तो आप जानते हैं ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. सारे हुंड को छोड़ दीजिए, पॉली को छोड़ दीजिए. तो 7 इलेक्ट्रॉन में एटलीस्ट 4 ऑर्बिटल तो ऑक्युपाइड हो जाएंगे, हमको 2 ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा. तो ऐसे कंडीशन में हमको पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी सबसेल में 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेंगे. So sp³d² hybridization is possible and outer orbital complex are formed. Nickel d8 configuration 2+. इस कॉम्प्लेक्स में outermost orbit 4d सबसेल के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे. तो sp³d² hybridization हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 210. तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. d0, d1, d2, d3, d2sp³ हाइब्रिडाइजेशन होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. d7, d8, d9, d10 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. बात आई d4, d5, d6 कॉन्फ़िगरेशन. The metal atom are with d4, d5, d6 configuration belonging to FeF₆ and 6th period. The second and third transition series forms inner orbital complex by d2sp³. But same configuration के साथ metal atom of 4th period form outer orbital complex with weak ligand and inner orbital complex with a strong ligand. इस कंसेप्ट का बेटर एक्सप्लेनेशन आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलेगा. ये लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, इसलिए यहां कुछ आपको एज्यूम करना होगा. जैसे Fe2+ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है. F- ए वीक लिगेंड, इसलिए sp³d² हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. वही Fe2+ d6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ या कोबाल्ट 3+, यहां आप ये भी लिख सकते हैं. कोबाल्ट 3+ d6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये है. अब ये इन लिगेंड के साथ, अब ये all 6 electrons are forced to become pair in 3d orbitals, leaving 2d orbitals vacant and d2 hybridization takes place. अब देखिए मेटल एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री मेटल आयन 4 है और कॉम्प्लेक्स में ये 0 हो गया. कॉम्प्लेक्स है लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो these complex are called low spin complex. दो एक्सेप्शनल बिहेवियर है. एक्सेप्शनल क्या है, कुछ है इसमें लेकिन आपके बियॉन्ड स्कोप है. +2 11 12 लेवल में इसको नहीं समझ, इसलिए इसको आप इंफॉर्मेशन के रूप में. CO2+ d7 कॉन्फ़िगरेशन है और इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. तो
6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 3D में रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू 4D एंड d²sp³ हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझने के लिए हायर स्टडीज में जाना होगा, इसलिए अभी आपको इसको याद रखना होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। Formation of tetrahedral complex metal atom may undergo sp³ hybridization because it has to provide 4 hybrid orbitals. Ni2 plus D8 configuration, NiCl4 2- tetrahedral complex में sp³ hybridization हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, सिमेट्रिक मोमेंट √8 और पैरामेट्रिक Ni कॉन्फ़िगरेशन मेटल एटम 3D8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। CO एक काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे रहा है 3D लेवल में, ये हो गया 10 और 4s वैकेंट हुआ और sp³ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इट बिकम्स डायमैग्नेटिक। Zn2 प्लस 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस Zn2 2+ के लिए sp³ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टेट्राहेड्रल की तरह यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन इनका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा, इसके लिए d²sp² हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये याद रखना है कि यहाँ पेनल्टी में तो ऑर्बिट के dx² y² ऑर्बिटल आएंगे, ns और p ऑर्बिटल px और py होंगे, क्योंकि ये 4 ऑर्बिटल xy प्लेन में। d8 कॉन्फ़िगरेशन NiCn4 2- या NiDnD2। All 8 electrons have become pair in 4 orbitals, leaving 1 d orbital vacant and d²sp². Again, something special, Cu2 plus D9 configuration है। Cu और 2+ बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है 4p लेवल में और d²sp² हो रहा है। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी does not give satisfactory reason for formation of inner and outer orbital complex। मैं बता रहा था आपको, does not expect color and stability of complex, does not differentiate between weak and strong। कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ये नीट का लेवल नहीं है, IIT एडवांस में इसको पूछा जा सकता है। आयरन एटम 3d6 4s2 FeCO5 4s का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, एक d ऑर्बिटल खाली मिला और एक d ऑर्बिटल खाली हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और d²sp³ हाइब्रिडाइजेशन है। इस d²sp³ हाइब्रिडाइजेशन में dz² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का है। Ni2 प्लस D8 कॉन्फ़िगरेशन NiCn4 2-3- के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया और d²sp³ हाइब्रिडाइजेशन हुआ। यहाँ d²sp³ के लिए dx² y² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। थैंक यू, आज बार यहीं तक। होप you like the video, subscribe the channel and press bell icon. Thank you for being with us.